Hello everyone and welcome back to my channel. I'm Ramaya and you guys are watching Simply Soulful, the platform where we talk about things that truly matter. As you guys know, my intention behind this channel is to create awareness and create conversation around topics that impact us on an everyday basis or that have a deep, profound impact on our lives. बट हमारे कल्चर के अंदर अनफॉर्चुनेटली उसके बारे में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस और एजुकेशन नहीं है. So if that is something that you would like to be a part of, feel free to subscribe to my channel and show your support as I'm just starting out and it means the world. So guys, आज का topic है the books that have changed my life or the books that have had such a huge impact on me that they have created the person that I am today. So let's get started with the first one. So the first book that I'm going to be talking about is of course The Power of Now by Eckhart Tolle. This book literally started my self-improvement and spiritual journey. इससे मेरे ऊपर इतना बड़ा impact create किया था that after this book I started my search and I started figuring out कि मैं अब कौन सी book पढूं to develop my understanding even further. So इस book का main topic is the present moment, the power of now. ठीक है कि it talks about how all we ever have access to is the present moment. लेकिन हमारा mind क्या करता है? Our mind is always creating illusions in the future and thoughts about the past. और हम कभी भी इस moment के अंदर joyful नहीं होते. We are somehow always waiting. लेकिन ये book सिर्फ इस चीज़ के बारे में बात नहीं करती. It also creates a very deep understanding of your own self. ये बताती है कि आपकी ईगो क्या है, आपकी पेन बॉडी क्या है, प्रेजेंस क्या है, प्रेजेंट मोमेंट असल में है क्या, एंड इट आंसर्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो आपके माइंड में आएंगे व्हेन पीपल टॉक अबाउट फिलॉसफीज ऑफ दीज काइंड्स. ये एक ऑलमोस्ट क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में लिखी गई है. एंड अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं और आपने ये बुक नहीं पढ़ी, देन आई वुड हाईली रेकमेंड दैट यू चेक आउट द पावर ऑफ नाउ बाय एकार्ट टोल. ओके, सो एक और बुक है जो मैं पावर ऑफ नाउ के साथ ही मेंशन करना चाहती हूँ, मगर दैट इज़ नॉट बुक नंबर 2, दैट इज़ काइंड ऑफ लाइक एन ऑनरेबल मेंशन, क्योंकि ये बुक भी एकार्ट टोल ने ही लिखी है एंड इट इज़ अ मोर एडवांस्ड वर्जन. या फिर पावर ऑफ नाउ का मैं सीक्वल तो नहीं बोलूँगी, मगर पावर ऑफ नाउ से भी ज़्यादा डेप्थ के अंदर जाने वाली जो बुक है दैट इज़ कॉल्ड अ न्यू अर्थ, ऑल्सो बाय द सेम ऑथर एकार्ट. एंड दिस बुक इज़ इनक्रेडिबल. मतलब ये थोड़ी एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग की बुक है, तो अगर आपने पावर ऑफ नाउ नहीं पढ़ी है तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप अ न्यू अर्थ स्टार्ट करें. आपको पहले पावर ऑफ नाउ पढ़नी है और उसके बाद अ न्यू अर्थ पढ़नी है. अच्छा, सो ये बुक स्पिरिचुअलिटी के बारे में, स्पेशली आपकी ईगो के बारे में बात करती है और भी डेप्थ में जाके. बट जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग इसके बारे में लगा था कि पावर ऑफ नाउ के अंदर ज़्यादा बात हुई है इंडिविजुअल ईगो की. इस बुक के अंदर ज़्यादा बात हुई है कलेक्टिव ईगो की, स्पेशली द कलेक्टिव फीमेल पेन बॉडी. इसके अलावा it talks about the roles that the ego plays. It also talks about discovery of inner space और आपने अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर मोमेंट बाय मोमेंट एक बैकग्राउंड जॉय कैसे क्रिएट करना है, बजाय इसके कि बैकग्राउंड के अंदर हमारे अंदर एक अनईजीनेस हो, एक डिस्कम्फर्ट हो, उसकी बजाय आपके बैकग्राउंड के अंदर एक पीसफुल जॉय हो, अ जॉय दैट इज़ बियॉन्ड ऑल अंडरस्टैंडिंग. So if that is something that interests you, I highly recommend reading this incredible book. Okay, so the second book that I'm going to talk about is this amazing book which is kind of short, इतनी लंबी नहीं है, मगर the words of wisdom that are written in this book, if applied correctly into your life, has effects that are just beyond words. And that book is Creative Visualization by Shakti Gwain. इस बुक के अंदर जिन स्किल्स के बारे में बात की गई है उनको मैं भी अभी अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ. सो इफ़ यू गाइज वांट टू सी अ वीडियो ऑन क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड आई विल मेक दैट हैपन फॉर यू. लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, स्पिरिचुअलिटी एंड आपकी जो सेल्फ अवेयरनेस जर्नी है, इसके अंदर
द पावर ऑफ विजुअलाइजिंग, आंखों को बंद करके एक फ्यूचर के बारे में सोचना और अपनी मर्ज़ी की रियलिटी और जो आउटकम्स आप अपनी ज़िंदगी से चाहते हैं उनको बार बार विजुअलाइज करना और फिर उन विजुअलाइजेशन से अपनी प्रेजेंट रियलिटी को चेंज करना इज़ अ बिग टॉपिक. लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसके बारे में बहुत सारी बातें करता है. देयर इज सो मेनी बुक्स टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ इमेजिनेशन, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन. और ये बुक बहुत ही क्लियर कट तरीके से आपको विजुअलाइजेशन के बारे में बताती है. इट ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ अमेजिंग गाइडेड विजुअलाइजेशन प्रैक्टिसेस जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इम्पैक्टफुल हैं. ऑल राइट, सो द थर्ड बुक इन दिस वीडियो इज़ अ बुक जिसके बारे में मैंने बहुत सारे लोगों को बात करते हुए नहीं सुना है. इट इज़ नॉट अ वेरी पॉपुलर बुक इन मेन स्ट्रीम बुक ट्यूबर की कम्युनिटी, but it is something that I have personally felt has really changed the way I look at life and just the way I look at myself in general. और वो बुक है The Garden of Truth by Sayyid Hussain Nasr. ये बुक है. This is what it looks like. It has a really beautiful cover और ये मैंने ऑर्डर की थी रीडिंग से. ये बुक जो है this is about Sufism. Now Sufism is a topic that I am really gravitated towards. मुझे Sufism के बारे में पढ़ना और उसको अंडरस्टैंड करना बहुत अच्छा लगता है. So this book goes into depth about a lot of the main concepts and the main schools of thought in Sufism. So अगर आपको मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूँ इस बुक के बारे में, तो अगर आपको सूफिज़म के बारे में कुछ भी नहीं पता है एंड यू डू नॉट नो anything about Sufi practices, then it basically focuses on purification of the heart and connection with the divine through different practices like meditation, like staying present, like gratitude, like zikr, etc. ठीक है. So ये book बहुत ही amazing तरीके से different Sufi stations, different schools of thought को बहुत ही अच्छे तरीके से explain करती है. So if you're somebody who wants a good introduction into this subject, I would highly recommend this book. Okay, so अब हम बात करेंगे अपनी fourth book के बारे में, and that is a book on psychology. As you guys already know, I absolutely love psychology as a subject. I'm actually studying to become a psychologist in the future one day, inshallah. And जो book है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, that is The Road Less Traveled by M. Scott Peck, and he is a psychiatrist. He's also a PhD. So ये जो बुक है दिस इज़ अबाउट होलिस्टिक साइकोलॉजी. मेरा ये बिलीव है दैट अ लॉट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट्स आर बेसिकली फोकसिंग अ लॉट ऑन जस्ट द माइंड एंड द बॉडी, और वो एक पूरे एस्पेक्ट को जो कि स्पिरिट है उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं, इवन दो ऑल दीज थिंग्स वर्क इन हार्मनी. सो ये जो साइकाइट्रिस्ट हैं ये बात करते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में इस बुक के अंदर. just generally it talks about life's meaning, purpose in our lives, and his experiences with different clients. लेकिन वो एक होलिस्टिक तरीके से बात करते हैं इसके बारे में, एंड ही टेक्स अ वेरी साइंटिफिक अप्रोच towards the techniques that he is talking about, but he also incorporates spiritual aspects into his techniques, which is why I was very gravitated towards this particular book. So if you're into psychology or just generally अगर आप अपनी information बढ़ाना चाहते हैं अपने बारे में और अपने आसपास के लोगों के बारे में, I would highly recommend you guys pick up this book and read it. जो हमारी फिफ्थ बुक है दैट इज़ ऑफ कोर्स द मोस्ट पॉपुलर बुक व्हेन इट कम्स टू द सेल्फ हेल्प वर्ल्ड. और आई थिंक कि हर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियो में, हर दीज बुक्स चेंज माई लाइफ वीडियो में इस बुक का होना ऑलमोस्ट इज़ लाइक अ कंपल्शन. सो मेरी भी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इंट्रोडक्शन है वो इसी बुक के थ्रू हुई थी, एंड दैट इज़ of course you guys know what I'm talking about, The Secret by Rhonda Byrne. Even though at this point मुझे लगता है कि इसके अंदर enough information नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लेकिन I do remember कि जब मैंने ये बुक पढ़ी थी तो तब just the way I looked at life changed for me, because इससे पहले मुझे
पता नहीं था how much power your thoughts hold. And I had no idea about manifestation. I had no idea what the law of attraction was. So that is why I'm including this book in this particular list. और ये बुक तो ऐसी है कि इसकी डॉक्यूमेंट्री वर्जन भी अवेलेबल है. सो अगर आप चाहते हैं टू जस्ट मेक योर सेल्फ अवेयर ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई वुड हाईली रिकमेंड आइदर यू चेक आउट दिस बुक or you go and watch the documentary which is also available on Netflix by the name of The Secret. Okay, so जो last book है जो मैं इस list में mention करूँगी, that is this incredibly interesting book और उसका नाम है Conversations with God by Neil Donald Walsh. The reason why this book is so interesting is because ये जो author हैं ये अपना पूरा process बताते हैं कि जब ये book वो लिख रहे थे तो he felt as if there was this other presence, this godly presence that wrote this book through him. मतलब कि वो questions पूछते थे, he would just ask questions to the universe. Questions about life, questions about God, questions about free will and predestination and why there is so much suffering in the world. And questions जो हम सबके mind में कभी ना कभी किसी point पर ज़रूर आए होंगे. Questions about what our soul is really like, what happens after we die, just all these interesting existential questions जिनके answers हमारे पास नहीं होते. And he says कि I would just ask these questions and wait for the answers. और जब different situations के through और different thoughts के through या just वो लिखना शुरू कर देते थे, the answers would come to him somehow, and then he compiled them all and he shared them with the world in the form of this particular book. And इसकी 3 different versions हैं, मतलब this is book 1 and then there's also book 2 and book 3. लेकिन ये एक advanced level book है, तो अगर आप self help या फिर spiritual books के अंदर एक beginner है, then I would recommend you start with The Secret or The Power of Now and then gradually read this book that I'm talking about here. But if you are somebody who wants to read an advanced book on meditation and spirituality, then I would highly recommend कि आप लोग ये book ज़रूर पढ़ें. Alright you guys, so with those 6 books I will be concluding this video. I hope आपको मेरी recommendations पसंद आई होंगी और अगर आपने ये books पहले से पढ़ी हुई हैं तो let me know कि आपको कैसी लगी हैं. And if you have any other recommendations for me, let me also know about those in the comment section down below. And as you guys know, I'm just starting out on my YouTube journey, so it will mean the absolute world if you guys could take a second and subscribe to my channel. Also give this video a like if you enjoyed it and let me know down in the comment section what you would like to see from me next. And with that said and done, I will see you guys in my next video. Until then, take care and Allah Hafiz.